integrated Masters of Science along with Bachelors of Science in Economics from IIT Kharagpur. After that, I worked with Accenture as an analytics analyst. After working there for 2 years, I started preparation for civil services. And when I couldn't get through, I started working with uh, O9 Solutions as a product manager, and I'm working there currently. In which company are you working? Associate product manager. In which company? O9 Solutions. 19 Solutions. Is it a national company or international company? It is a national company, and its founders are Indians. So it Indians. started as a startup, and now it has grown to a unicorn company. Unicorn company. And which services they provide? They are basically into supply chain solutioning, where they provide a software solution to manage supply chain for different companies. So our customers include Nike, Prada, Adidas, and all the major FMCG companies. So these companies provide, you can say, in simply logistic supply chain. Yes. So basically, So it's about uh, demand planning and supply management. can we assume it is service based companies? Yes, it is. It provides software as a service, Software, and yeah. yes, So how much year you have worked? What is your experience? I have worked How for many? 4 years. 4 years, and still you are Yes, working there. yes. I mean, my total years of experience is 4 years. I've been working in online solutions from 13th May 2024. And I think when you are working from 4 years, so your pay scale is also good, and you are getting a good amount of package, isn't it? Yes, sir. I Approx how much? think it's around 27 lakhs 27. per Yeah. So year. per annum. So I Yes, think 2 lakh or 2.5 something after tax deduction, it will be approx yes. 2, It's 1.8 lakhs per annum after 1.8 lakh. tax. Yeah. Still, and when you join civil services, do you know how much salary we get? It could be around the range of 50 to 60,000 per month. Yeah, when you join level 7, it will be around 60,000, and when you joined level 9, it will be around approx 80, 85. Yes, sir. So I think, don't you think it is a loss of 1 lakh Uh, when you join sir, civil services? I do not see it in terms of money. Money is not an issue for me right now. It is not a factor in my life that I hold important. Right now, I want to gain experience through public service and by interacting with people and gaining experience from them. So that So at One India company, are you not getting that things? Public so interaction or experiences? What? in private sector, I think the kind of work is unidirectional. You are focused on one aspect of an industry, uh, be it supply chain or analytics, and your approach is not wider. In civil Okay, services, I what's think your preference? so. My preference is Bihar Police Service first, then Bihar Education Services, then uh, Excise Officer, and then Revenue Officer. Can you mention some initiative, some policy which is which has been taken by Bihar Police or Bihar government to improve police challenges, police reforms? Can you mention some initiative? Uh, So from what I can recall right now, Bihar Police has been focusing on hiring women constables in large numbers to Okay. increase. Second one, Mm, I
don't know at the moment, sir. Okay. Are you aware of Bihar Public Grievance Portal? Not right now, sir. Sat Nishay 1 or 2? Uh, Not yet. Okay. Are you aware of Bihar Laghu Udyami Yojana? No, sir. I'm not really aware about Bihar news as of now. Okay. Okay. Tell me five tourist places of Bihar. So one of them is Gaya, which holds importance both for Hinduism and Buddhism. Okay. Second is Patna, especially the ancient part of Patna, that is Kumrahar. Then Patna Sahib, that holds importance for Sikhism. Rajgir, which was the capital of Magad Empire. Okay. Can And you mention? Okay. Okay. Can you mention uh, some districts which has a specific production? Like you can say that yes, sir. item that area is famous for that production, that items. Yes, Like sir. when we For see example, northwest that is famous for again sugar cane. In the same okay. way, can you mention some examples of Bihar? Yes, sir. For Bhagalpur, I can recall Zardalu mango is a, GI product. For Nalanda, Silao Khaja is No, I'm an not talking important about thing. GI tag product. I am talking about in general. Just like you say, Jardalu Am, and Bhagalpur also famous for what? Except for Katarni, right? Jardalu, Katarni Chawal, and one more important, Uh, Bhagalpuri silk. Do you know silk? yes. Yes, sir. Okay, I recall now. okay, okay. And other one, if we see about northeast district, which product is I famous think for that? uh, I cannot recall, but the Can you uh, recall how many district in easternmost of Bihar? How many sir, district? Haven't you gone I through know the Bihar? truth. I How will you haven't. work? Hmm. Yes, sir. Okay, Sorry. okay. So uh, What's your optional? Economics, yes, sir. Economics is my optional. tax buoyancy, and tax elasticity. What is the difference? Yes, sir. Tax elasticity is how much percentage of tax can increase. How much an increase in percentage rate of tax can increase the total tax collection. And tax buoyancy is the percentage of increase in tax collection as percentage increase as a percent increase in GDP. Are you sure? I cannot say with certainty right now, but that's what I can recall at the moment. Okay. Are you aware of US Federal Reserve? They had cut down the rate. Do you know? Just Sir, like MPC, Monetary Policy Committee, just like RBI, they released MPC and they have to cut down or raise At tapering. the policy rates. In the same way, US Federal Reserve, they have cut down Fed rates. Are you aware of that? no, sir. I'm aware of taper tantrum where they increase the uh, policy rate so that they can uh, How increase much? How the much policy rate they had increased? uh, that the quantity I cannot recall right now. Okay, The okay. What amount. is the impact? What will be the impact in So context of America and also in context of India? so the foreign investment that for America that will decrease since the investors that are investing in foreign countries, they'll find America more lucrative in terms of investment since the federal reserve rates have been increased. For because of that, the FII uh, in India they would reduce, leading to volatility in the exchange rate between dollar and rupee. So for India, it has a negative impact, but for
US, it has a positive impact since more money would be parked in the US economy because of an increase in Federal Okay, Reserve rates. okay. Over to Rupesh, sir. Okay. Aman, what is fat tapering? Sorry, sir, I couldn't hear you. In economics, there is a term, fat tapering. Fired है tapering. जो अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है ना, Yes, sir. वो अपने पॉलिसी रेट्स को कट करते रहते हैं कई बार. Oh, okay. Tapering. Okay. यस, तो समझ पा Yes, रहे हैं sir. आप? So, yes, sir, I can understand. So, tapering is cutting the policy rate so that they can promote higher growth rates. Any economy that any central bank, when it tries to reduce the interest rate, then it wants to stimulate investment demand in the economy. And because of an increase in investment demand, the GDP is expected to grow. ओके. So तो that is the expectation behind. जब अमेरिका में Uh, पॉलिसी रेट्स में टेपरिंग होता है, तो भारत पे उसका क्या असर होता है? so if the federal bank reduces the policy rate, then uh, the investors in America would not find it lucrative to uh, invest in America. They would rather look for higher rate of return. So they will start investing more in foreign economies like India, where the rate of return is much higher due to higher interest rate. So there will be an increase in FDI as well as foreign institutional investment in India, whereas that would reduce the savings rate in US would reduce. और जब सेविंग रेट यूएस में बढ़ जाएगा, तब क्या असर होगा? Then uh, India will, for India, the effect would be a decrease in foreign investment. So there would be higher volatility in our exchange market, our capital markets as well, ओके. because of which ओके, the economy can ये go बताएं down. कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब अपने पॉलिसी Yes. रेट को चेंज करता है, तो वो हमें सूचना देता है कि इन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है रेपो रेट को. इसका क्या मतलब होता है? Sir, basis व्हाट इज point बेसिस is पॉइंट? yes, sir. Basis point is calculate is an indication of the percentage. So 25 basis point would be 0.25 percentage increase or decrease in the policy rate. And 50 basis point would be an increase of 0.5% increase or decrease in the policy rates. एक है प्रोमिसनरी नोट, पी नोट जिसको हम लोग बोलते हैं. समझ पा रहे हैं? Yes. तो Yes, sir. कहा जाता है कि इससे जब इन्वेस्टमेंट आता है तो ये सेफ नहीं माना जाता है. Yes, sir. क्या ये सही है? So promissory rate is a promissory note, sorry, यस. is a note which allows foreign investors to invest in a foreign economy without registering with the economy. So, since we don't know the source of the foreign investment, that leads to higher volatility. That could also lead to uh, shell company funds being channeled in India. So, therefore, since the source of the investment is not known, it can lead to volatility in the market. Therefore, promissory notes are not always desired. However, on the other hand, there is some benefit as well. Promissory notes help increase the foreign investment in an economy, which and a growing economy like India, which has a lower savings rate but a higher investment demand, would require. So there are pros and cons of ओके. both pros and cons of a promissory note. आप ये बताएं, इतना अच्छा एक्सेंचर में जॉब कर रहे थे, अभी भी आप जॉब में हैं, आपकी सैलरी इतनी अच्छी खासी है और सैलरी में ग्रोथ भी प्राइवेट सेक्टर में काफी बेहतर है. सबसे पहले तो ये बताएं, एक्सेंचर में आपका ज्वाइनिंग कैसे हुआ था, उसके बाद आपने छोड़ा क्यों उसको? Sir, I was placed from the campus in Accenture. ओके.
and I was a part of analytics team where I used to make machine learning models, and that's how I got placed, and I continued working there for 2 years. But I felt that my curiosity, it needed something more than just analytics. It needed exposure to people and to gain experience of a wider variety, like how uh, developmental programs are carried out on the ground and Okay. things like that. What is your package at Accenture? At Accenture, it was 14 lakhs per annum. So I used to get 85,000 in hand. 85,000 in hand. 40 lakh CTC? Yes, sir. Okay. In hand? 85,000 per Okay. month. Per month. And now? Uh, Sorry. And now? In which company you are? Right. I am in O9 Solutions, where my package is 27 lakhs CTC and I get 1.8 lakhs in hand. तो एक्सेंचर में इतना अच्छा था, इतना पैसा मिल रहा था, आपने उसे छोड़ दिया और उससे आप जो है कि डिग्रेड करके दूसरे जॉब में आप गए हैं, तो वहाँ आपकी सैलरी कम हो गई है, काफी कम हो गई है। Sir, I took a gap to prepare for civil services, and uh, I don't think the salary has been degraded based on the gap in my experience. I think I'm getting a fair compensation, which is from 14 lakhs to 27 lakhs. I think it's fair. इट्स 27 लाख is CTC Yes, sir. and in hand 1.8 lakhs per month. 1.8 lakh per month in hand। Yes, sir. ओके ओके। आप जब बिहार गवर्नमेंट में आएंगे आपकी सैलरी और कम होने वाली है, और इस Yes. बार जो आपकी सैलरी होने वाली है वो मैं अगर लेवल 7 पे या 6 पे की बात करूं, तो किसी भी लेवल 9 या लेवल 7 जब आप किसी भी सर्विस में आने वाले हैं, इतनी सैलरी आपको बिहार गवर्नमेंट नहीं देने वाली है। और जो इंक्रीमेंट अभी आपको मिलने वाला है यहाँ या और कहीं, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में, वो तो बिहार गवर्नमेंट में मिलने वाला है नहीं। आप इसको सही सोचते हैं कि आप वहां से छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं? आप अच्छी जगह अभी भी काम कर रहे हैं। Yes, sir. So if I can elaborate on my motivation, one of them is staying closer to home to my parents so that I can be around them. Right now, I'm working in Bangalore, which is far away from home, and I would like to stay closer to home. Second is I've never stayed in Bihar for a long time. I just spent my childhood there for around 8 years, and I would like to get to know my state better and contribute to its economy. And money is not that big a factor for me. I mean, family wise, I think we are stable enough. So rather than that, gaining experience would be a फैमिली higher क्या करते हैं motivation. आपके? आप बता रहे हैं कि स्टेबल इनफ है। माता पिता क्या करते हैं? My father is retired, but किस we सर्विस से earn रिटायर्ड है? rent income. He was an engineer in Indian Railways. ओके। तो अब आप सोच रहे हैं कि बिहार आ जाएं? Yes, sir. बिल्कुल अमन, हम लोगों की भी इच्छा है कि आप लोगों की तरह जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो बिहार आएं और बिहार के सेवा में योगदान दें। सुनिए सर। Okay. Aman, you are given two ropes. One is thick and one is thin. And you are asked to hang same amount of weight from both of them. Okay? By your hand. So Uh, which one will hurt more? if I can repeat the question again, sir, I have Okay, two okay. rows. One is thin, one is thick, and I have to weigh them with both hands. You have to weigh them by same amount of weight, one in each hand. Okay? So which hand will hurt more? Uh, With with the thinner one or thicker one? Thicker one will apply more pressure on the hand. Therefore, it is bound to hurt more since the surface area on the hand that it will cover will be higher. No, Aman, the rope that is thinner one will hurt more.
It will cause more pressure in less area. Okay. Okay, so may I know the reasoning behind it? Yes, the thinner one, which has less area, will cause more damage because you will have same amount of weight with the both the rope. Okay, but Yes. the same weight you are hanging with thinner one, it will apply more pressure in less area. That's why it will hurt them. So Okay. I think you're Uh, right because pressure is forced by upon area. yes, yes. Thank you. Okay. Tell me the difference between area and volume. S- Area is usually applied to the area on a plane that it would occupy, and volume is the amount of air. Uh, volume Okay. is sorry, I cannot exactly tell the difference. Okay. Suppose you have a sphere, solid sphere. Okay. Yes. You you cut that in some pieces. So you will have more sphere or any shape, whatever you choose. So the new volume, the sum of volumes of the new spheres will remain same or it will get changed. The sphere You have one is sphere, you cut them into pieces, so the you get new spheres. So the cumulative volumes of the new spheres will remain same to the original or it will get changed. how do we cut the spheres into spheres? Like Doesn't matter and whatever way you cut. so the volume would be the same because the mass that occupies the space, that would be the same. Okay, and the surface area of the original one and the cumulative of the new pieces. The surface area would be higher because what was not exposed to the surface before is now exposed, and that would take up more surface area. Okay, Aman, very good. Professor, Okay. Aman, your interview over? Thank you. अमन, इससे पहले आपने बीपीएससी दिया था एग्जाम? Yes, sir. I gave it last year and last to last year, and I didn't qualify prelims in both the attempts. Are you not comfortable in Hindi? सर हिंदी में कुछ शब्द बोला नहीं जाता है, मतलब उसका हिंदी नहीं आता है. नहीं, हिंदी नहीं आता, but when you join civil services in Bihar, you have to work in Hindi, you have to write in Hindi, all the letters will be sent in Hindi, will be written in Hindi, and especially all the वर्तनी, you can say कि शुद्ध वर्तनी इसको बोलते हैं हिंदी में. नहीं, अल्फाबेटिकली, ग्रामेटिकली आप उसको कैसे सही कर पाएँगे फिर? मान लिया आप वो चीज़ की आप जानकारी अगर नहीं रहेगी, तो पहले सर नंबर तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर कंफर्टेबल, मतलब अगर पूछेंगे इंटरव्यू बोर्ड वाले, तो आपको उतना तो आपको आना चाहिए बोलना, तो आप प्रयास जी करेंगे, सर, जी सर, क्योंकि अल्टीमेटली आप हिंदी बेल्ट एरिया, हिंदी बेल्ट स्टेट में आप काम करने आ रहे हैं, आपको जहाँ भी बोलना होगा हिंदी में ही बोलना होगा। इवन अगर रीजनल लैंग्वेज जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, इट विल बी मोर कंफर्टेबल, क्योंकि आप जिससे जुड़ेंगे, चाहे जिला स्तरीय पदाधिकारी ही क्यों ना हो, अगर जिला स्तर पे भी आपकी, जैसे मान लिया आप एज ए डीपीओ बनते हैं, आपका जैसे बीएस पहला पद है, पहला प्रेफरेंस है, तो आपको काम तो उसी क्षेत्र में करना है, उस ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है,
तो लैंग्वेज का तो बैरियर उसको थोड़ा-सा प्रयास करेंगे भूलने का, ठीक है? जी क्योंकि सर, मैं आप सीख जाऊँगा। हाँ, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रयास करेंगे जब आपसे पूछे इंटरव्यूअर वाले तो आप बताएँगे लेकिन ऐसा ना एकदम बिल्कुल आप प्रयास ही ना कर रहे हो, है ना? जी सर, समझ तो पा रहे हैं ना हिंदी? बिल्कुल। हुँ, तो समझना भी है और प्रयास करना है कि बोलने का भी प्रयास करना है, ठीक है? बाकी आपका कंटेंट जैसा कि अश्विन सर ने पूछा देख लीजिएगा टेक्निकल, जो मैं पूछा हूँ कुछ-कुछ जो है उसको थोड़ा-सा कमी मुझे ये दिखा कि आपने जैसे मैं पूछा ये वाला क्यों जॉइन करना चाहते हैं? 1 लाख रुपए कम है, तो पब्लिक इंटरेक्शन ठीक है और ये बता सकते हैं कि मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, मैंने बताया भी मोनोटोनस लाइफ़ है। अब उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? जो सैलरी जो आपका इतना कम सैलरी में आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो एक आप एस्पेक्ट्स फैमिली वाला भी डाल सकते हैं। फैमिली आपकी यहीं रहती है, बिहार रहती है? जी सर, हाँ, तो आप ये भी आप डाल सकते हैं। तो पॉइंट वाइज़ उसमें एक डालना ज़रूरी है क्योंकि उससे ये होगा कि आप लॉजिकली जस्टिफाइड हो जाता है वो। बाकी इकोनॉमिक्स का और भी देख लेंगे बेहतर तरीके से। क्यूजिंग, रीडिंग, हिस्ट्री हम लोग तो नहीं देख पाए, लेकिन ओवरऑल ठीक है। आप सबसे अच्छा बात है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और ऐसा नहीं लग रहा था कि अनुभवी हैं, तो अनुभव का फ़ायदा है आपके पास। आप हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो बिहार सरकार तो चाहेगी ऐसे कैंडिडेट को लें। बस थोड़ा-सा हिंदी को देख लेना है। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बिल्कुल अमन। सारी चीजें तो कार्तिकेय सर ने लगभग बता ही दी। दो चीजें हैं कि अगर आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो शब्द जो है कि उसके टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में रहने दें और जो फोनेटिक्स होता है ना उसको अगर हिंदी में बोल सकें जब वो पूछें तब। अदरवाइज तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो चाहते ही हैं, इसलिए हम जान के हिंदी में सवाल ही पूछ रहे थे आपसे। ठीक है, वो कोई ना कोई एक मेंबर जरूर ऐसे होंगे जो हिंदी में पूछेंगे ही। ठीक है, तो जब वो हिंदी में पूछें तो जी, आप चाहें तो हिंदी में आंसर कर लें तो अच्छा लगेगा, नहीं भी आंसर करते कोई बात नहीं, उनसे परमिशन ले लें कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, मे आई स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मे आई आंसर इन इंग्लिश, तो वो बोल देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इस तरीके की। बाद बाकी आपका जो अनुभव है वो तो काफी अच्छा है और आपने ठीक ठाक ही जवाब दिया। बस बिहार को देख लेंगे, आप बिहार के बारे में बिल्कुल ही अवेयर नहीं है और बिहार में काम करने के सॉरी लिए आ मैं रहे हैं। भूल गया, बिहार तो मैं हाँ, भूल ही गया। बिहार तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और कोई भी चाहता है कि आप जिस सपोज़ करिए कि मैं संस्था में आपको लेना चाह रहा हूँ, आप उस संस्था से अवगत ही नहीं हैं, तो कोई क्यों लेना चाहेगा उस व्यक्ति को, है ना? तो बिहार बिल्कुल आप अवेयर नहीं हैं, जो आपने पढ़ा होगा पीटी में, मेंस में, उसके रिवीजन कर लेंगे। अभी जो पॉलिसी चल रही है, हमने क्लास भी लिया था, क्या कौन-कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स है, उसको देख लेंगे। तो थोड़ा-सा बिहार को अप टू डेट कर लेना है। मैंने बहुत ड्रिल किया बिहार पे, ताकि जानकारी रखना पड़ेगा ना क्योंकि आप बिहार में आना चाह रहे हैं, तो बिहार से आप अवगत नहीं हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बिहार को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। रुपेश बिल्कुल सर। बिल्कुल। बस और तो काफी अनुभव है, आपका अनुभव तो दिख ही रहा है और बहुत ही डिसेंट तरीके से आप जवाब देते हैं। थोड़ा सा सॉरी बोलने में सच्चा जाते हैं, जहाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, खुल के सॉरी बोलना है। कोई दिक्कत बोलना नहीं, है। सॉरी बोलना कोई पाप थोड़ी है, स्माइल करते हुए बोल देना है कि सर नहीं आ रहा है। देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि वो पिछला जो लड़का था अभिनंदु, वो बार बार अलग अलग शब्दों का सर मैं इसे रीड कर लूंगा, सर मैं इसे और पढ़ूंगा, सर सॉरी सर मैं इसे रिकॉल करूंगा सर। ठीक है, तो उस वो दिखाता है ना कि क्यूरियोसिटी, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा मुझे भी पता है, बस वो दिखाता है कि हाँ सर मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ, मैं जान लूंगा। खास करके बिहार के क्वेश्चन के बारे में, तो जहाँ आप ब्लैंक कर रहे थे वहां अगर इस शब्दों का प्रयोग कर देते तो वो फिर माफ हो जाता वहीं पे। ठीक है, इस तरीके से। और बाद बाकी ठीक है आपका ये एक काफी good। डेकोरम है, इंटरव्यू का डेकोरम है, उसको फ़ॉलो करना है ना? सॉरी और एक सर, चीज पार्डन बताते सर, हैं अमन, आई चूंकि बिलीव आप इट, आई हाईली सी इट। क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह से भी आपने अपनी पढ़ाई की है, तो कई बार होता है ना इंटरव्यूअर काफी एज के लोग होते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो उनको हुँ, करेक्ट नहीं करना है वहाँ इंटरव्यू में बैठ के कि सर हम तो यही जानते हैं, आप क्या बता रहे हैं हमको। ठीक है, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं उनसे मिस्टेक भी हो रहा है तो सॉरी सर मेरी जानकारी में तो यही है, और बाद में कि मैं सर इसे देख लूंगा। ठीक है, उनके वहाँ हल्का-सा स्माइल करना है, सॉरी सर, उनके मैं देख ईगो को लूँगा। हुँ, बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। अगर एक आध बार आप सॉरी बोलते हैं तो उनका ईगो सेटिस्फाई होता है कि हाँ लड़का बहुत तेज बनने जा रहा है, हम तो फंसा ही लिए उसको। ठीक है, बस इस चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है, चलिए, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। कब है इंटरव्यू, कब है अमन? 3rd अक्टूबर। 23rd। कब है? हाँ, 23 हाँ, तभी आपके अक्टूबर। पास 10 दिन से ज़्यादा समय है। 2 जी, वीक्स समय है आपके पास। देखिए उसको अच्छे से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल चलिए रुपेश सर, गुड नाइट। बिल्कुल।